Learner, welcome to AS Study X. Today we will continue our decomposition reaction. So decomposition reaction में हमें टू रिएक्शन स्टडी करनी है. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड इज फोटोलाइसिस. ये वीडियो पार्ट 2 है और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? सो यहाँ पर क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट. हमने लास्ट क्लास में ये स्टडी किया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है. अब यहाँ पर हम रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे ताकि वहां पर सो दैट आवर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड. सो electrolysis, these reaction involve the use of electrical energy for decomposition of the reactant molecules. Here we will see the examples when electric current is passed through acidified water. Acidified water means that water contain the H plus or OH negative ions. ठीक है, it decomposes to give hydrogen and oxygen gas. So यहाँ पर हम रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करेंगे बाय पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी. Second is photolysis or photochemical decomposition. Here we will use the light energy to break down of the reactant. For example, when silver chloride turn gray in sunlight, this is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. Here is you can see the silver chloride. So when we put the silver chloride into the sunlight, so sunlight decompose the silver chloride into silver and chlorine. Again, second reaction is silver bromide also behave in the same way. When silver bromide we will keep in the sunlight, so we will get the silver and bromine. So the above reaction are used in black and white photography. आपने देखा होगा कि इन एंशियंट टाइम हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का यूज करते थे, उसमें हम AGVR का यूज करते थे. सो नोट पॉइंट टू बी नोटेड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. जैसे कि हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? Definition here: when a more reactive element displaces a less reactive element from its compound, it is called displacement reaction. Here you will see कि यहाँ पर अगर दो एलिमेंट होते हैं, एक मोर रिएक्टिव है, एक लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव इज मोर पावरफुल एंड इट कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट विच इज लेस पावरफुल. So there are two types of displacement reaction. First is single displacement, second is double displacement. So here single displacement reaction definition: it is a type of chemical reaction when an element react with a compound and take place of another element in that compound is called single displacement. Here you can see the reaction zinc plus copper sulfate give rise to zinc sulfate plus copper. Here zinc is more reactive than copper, so zinc can displace the copper and will make the bond with sulfate, so it will become zinc sulfate and copper will remain isolate. Second reaction is iron plus copper sulfate. Again iron is more reactive than copper. अगर आप रिएक्टिविटी टेबल देखेंगे तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो वी विल सी कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया अपनी पोजीशन से और खुद सल्फेट के साथ बॉन्डिंग बना के FeSO4 बना लिया एंड कॉपर विल रिमेन अलोन. सो that is called single displacement reaction. Here why? Because here is only one single element can displace the other weak less reactive element. Now fourth reaction is double displacement reaction. That is actually a part of the displacement reaction. So here you can see its name suggests double. So here two different ions or a group of atom in the reactant are displaced by each other. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरियम. सो सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया. अगेन बेरियम ने भी सोडियम को डिस्प्लेस करके बेरियम सल्फेट बना लिया एंड सोडियम क्लोराइड बना लिया. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी सोडियम कैन डिस्प्लेस द बेरियम, सो इट विल रिएक्ट विद क्लोरीन, इट विल गिव you sodium chloride, and when barium displaces the sodium it will give you barium sulfate. And AgNO3 sodium chloride, sodium is, as you know, is more reactive than silver, so it can displace the silver and can combine with the NO3, so it will give you NaNO3, that is called sodium nitrate, and AgCl3. So here you can see कि यहाँ पर कुछ प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड होता है. प्रेसिपिटेशन इज व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
जो हमारे पास बेरियम सल्फेट है और जो हमारे पास NaNO3 है, इसका प्रेसिपिटेट बनता है, एक सॉलिड इनसॉल्युबल फॉर्मेशन होती है. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड precipitation reaction. So what is definition here? Any reaction in which an insoluble solid is formed that separate from the solution is called precipitation reactions. So thank you very much.